Today we are going to learn one more learning theory that is given by Bandura. Okay. Here, Bandura talks about the cognitive aspect of learning. So we can say that is the theory which bridges the gap between the traditional learning theory that is based on behavioristic approach and cognitive learning theory. Okay. So before that we should know that this theory is based on social cognitive theory. Means ये theory का आधार या base क्या है हमारा social cognitive theory. That theory is basically based on the social cognitive theory. Means society and cognition. Means what the very word cognition means, like unlike Skinner and Pavlov, Bandura is thinking we cannot learn just through responses, reinforcement and stimulus. For learning we require processing. Okay. Because we have one brain, we have one mind which can process. So the very word cognitivism means that our mind has the capacity of information processing where we can collect the information, we can retrieve the information, we can reflect the information, we can store the information, we can do the logical thinking. Means हमारा जो brain है, we should make use of our brain and we can make use of information processing. Because this very word cognitive psychology has come after the invention of computer. Because psychologists think when computer can do the processing and our human brain has developed the computer. So while in learning, we are learning through behavioristic approach, and from there comes the concept of cognitive psychology, that our brain can do the information processing. There are input, we have to process the thing, and then the output will come. Okay, so that is the base of that theory, that we have to reflect, we have to do the information processing, and social means society. As the child born in the society, the child has the process of growth and development in the society, and in society we learn everything, no matter even the schooling system comes under society. So हमारा जो learning होता है वो कहाँ होता है? Society में. So it's a social cognitive theory, means in society whatever we see, whatever we observe, and on the basis of our observation and on the basis of our viewing, we do the processing, and that processing results in our behavior or in turn in our learning. So let's see, we learn through modeling and observation of behavior. According to Bandura, हम जो भी चीज को learn करते हैं और any behavior which we make or any behavior which we possess or show, that is based on the process of modeling and observation. Modeling means किसी को मॉडल करना, किसी को एनालाइज करना. तो हम लोग सभी अपने लाइफ में किसी ना किसी को मॉडलिंग करते हैं, किसी को एनालाइज करते हैं. सपोज आई एम हियर एंड आई एम टीचिंग यू. सो मेरे यहाँ पे खड़े होकर टीच करने में देयर आर सो मेनी टीचर्स जिनका मेरे ऊपर असर है. तो कहीं ना कहीं वाइल टीचिंग मैं मॉडलिंग करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, एंड वाइल टीचिंग आई एम ट्राइंग टू टीच लाइक देम. एंड बीइंग अ स्टूडेंट, आपके भी बहुत आइडियल होंगे टीचर, ऐसे होंगे कि आप उनकी तरह बनना चाहते हो, नॉट ओनली इन द एजुकेशन, इन द sports, in fashion, okay, in social, in other social aspect. हमारे बहुत सारे लोग ऐसे फेवरेट होते हैं जिनको हम मॉडल करते हैं, एनालाइज करते हैं. सो मॉडलिंग मीन्स आप इसके सब बनना चाहते हैं, इनको देख के यू वांट टू इम्बाइब समथिंग. एंड ऑब्जर्वेशन, आप ये बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सीखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू बंदूरा, देयर आर टू थिंग्स, मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशन, दैट आर द बेस ऑफ बिहेवियर. मीन्स हमारा जो भी बिहेवियर है, जो भी हम व्यवहार को दिखाते हैं, जो वट एवर द बिहेवियर वी आर रिफ्लेक्टिंग, इट इज बेस्ड ऑन कहीं ना कहीं मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशन. हम किसी को एनालाइज करते हैं, उसके जैसा बिहेवियर वी वांट टू शो, वी ऑब्जर्व समवन, वी ऑब्जर्व समबडी, एंड उसके जैसा जो है हम करना चाहते हैं. ये चीज आप छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा देख सकते हो. जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल, बट वो हमेशा बड़ों का शूज हो या स्लीपर्स वो पहन के चलते हैं. When I observe my son, every time he want to wear the shoes of his father, like the shirts and t-shirt of his father, and every time I think when he will grow up, वो कब बड़ा होगा. So they are the things the child do. Even the small girls, they are putting the lipstick and kajal of their mother or any other beauty item of whatever they like, they try to perform. तो ये जो चीज होता है, that is the model
modeling and observation, and child learn maximum from this. कि वो behavior को observe करके जो जिसको वो लाइक करता है, they try to imitate, they try to identify. So ये जो modeling और जो observation का process होता है, that is based on two factors. Again, two word, identification and imitation. Means child identify and imitate. दोनों में अंतर है. Identification means similarity. Okay, like boys, as I given you example, my son, he want to copy or observe his father. Like girls, they want to observe and copy their mother. Why? Because identification means they see like, yes, we are similar, we are from the same gender, we are look alike, or we are sharing some interest, we are having something in common. तो जहाँ पे ये जो common जो similarity का factor है, there we identify ourselves and we try to copy and we try to repeat the things. Okay, but imitation is something different. Imitation means नकल करना. Okay, they are doing like this, तो मैं भी ऐसा कर लेती हूँ. Okay, आपने किसी को देखा, उसको कुछ अच्छा लगा, तो आपने उसका जो नकल कर लिया, that is imitation. But identification is more powerful than the imitation. क्योंकि imitation is not everlasting. वो आप कुछ टाइम के नकल कर सकते हो, then it can vanish. But when you identify, you relate, and then you assimilate, तो वो चीज जो आप assimilate and accommodate करते हो, that thing sustain. Okay, so we learn according to Bandura, we learn from the process of modeling and observation, and that is based on identification and imitate. The child either identify himself or herself, or they can imitate. Okay, so here अगर हम बात करें कि what is stimulus and what is response, क्योंकि learning में we have the concept of stimulus and response from behaviorism. So, and that there is something nearby behaviorism, between behaviorism and cognitivism. So, observation of behavior work as stimulus. Means बच्चे और एडल्ट जो भी बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, in the environment that act as stimulus and imitate it or not. क्योंकि imitate it or not, क्योंकि बीच में क्या है, there is a processing. हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, वो भी बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं, then we do the processing, thinking, reflection. Okay, and then we decide if we should model or we should observe this behavior or not, we should imitate this behavior or not, and if we do, that is our response, and if we do not, that is also our response. So यहाँ पे जो observation of behavior, we can say it is stimulus, और जो हमारा decision है, we imitate it or not, that is our response. So there is a cognitive model of this particular theory. Input in the environment पे whatever the input, whatever the behavior जो भी observable है, जिसको हम observe करके कुछ सीख सकते हैं, they are as input, और वो कहाँ पे है, environment में. And then there is a mediational process, that is mental event. यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग का एस्पेक्ट होता है. मीन्स वी मीडिएट, वी थिंक, वी रिफ्लेक्ट, वी आइडेंटिफाई. Okay, we do the processing of the information, we try to assimilate the thing, we try to accommodate the thing. ये जो सारे mental processing होता है, then come the output. Output means your behavior. Means इस process के बाद what is your behavior? It is changed or it is not changed. You imitated or you have not imitated. You identify or you not identify. Means किसी को observe करके, किसी को model करके, what you have learned, that is the result, that is the output. So as I told you, this theory follow the cognitive aspect of learning. Means information processing, means input होगा, process होगा, and then there is the output. So whatever thing in the environment, उसके ऊपर that comes as an input. उसके ऊपर जो आपका mental thinking जो processing है, that is your processing, and output is the result, the change in your behavior. Okay, so that was about the cognitive model. And now the types of learning. According to Bandura, there are two types of learning. This हमारे learning का type होता है, how we learn. Because these were the basis. Okay, what happened in this theory. Now the types. There is two, inactive and vicarious. Okay, so first is inactive learning. Inactive learning क्या है? Okay, the name suggests inactive means you have to act. ऐसा नहीं है कि आपने just देखा है, आपने सीख लिया. Sometimes you have to act. जैसे बच्चे, everybody want to Sachin Tendulkar, everybody want to Virat Kohli, everybody want to MS Dhoni. Even my son too, all the time he want to just play with bat and ball.
Okay, so inactive means you have your footwork. What is the game? Sports में क्या है कि how they are playing, how is their footwork, okay, how is their technique. So बच्चे जब उनको observe करते हैं and they are betting like them, okay, their footwork, their skill, their psychomotor skills or the techniques, so they observe and they try to identify and they try to imitate. So inactive means आपको करके देखना है. Like suppose those who can dance so well, so ऐसा नहीं कि आपने डांस को देखा एंड सीख लिया. ओके, लाइक वी प्ले द वीडियो एंड मीनवाइल वी परफॉर्म. उनके साथ along with you perform. जैसे लोग आपको डांस सिखाते हैं, सॉन्ग सिखाते हैं, वो गाते हैं, आप भी साथ में गाते हो. दे आर मूविंग, यू आर ऑल्सो मूविंग. सो जो आप जिसको परफॉर्म करके सीखते हो, यू आर ऑब्जर्विंग एंड साइड दैट यू आर परफॉर्मिंग. सो जो आप ऑब्जर्व एंड परफॉर्म करके सीखते हो, दैट कम्स अंडर इनएक्टिव लर्निंग. यू ऑब्जर्व एंड यू परफॉर्म, यू एक्ट एंड यू लर्न. ओके, सो नेक्स्ट सेकेंड क्या है आपका? विकैरियस लर्निंग. विकैरियस मीन्स which you just observe and you try to imitate. means क्या vicarious में क्या है? आपने देखा, आपको लगा कि ओ ये ऐसा हो सकता है, so if she can do, तो इसको ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, so if I can do, I will also get the same result. This vicarious learning is something reinforcement oriented. यहाँ पे क्या होता है? Suppose you have seen that she got first prize in the school, so everybody, even teacher, principal, your classmate, everybody is clapping for her, everybody is happy for her. So आपका ये learning होता है. instead of her, अगर आप ऐसा परफॉर्म करते हो तो the same result आपको भी मिलेगा. so that type of learning is vicarious learning. आपने किसी को कुछ अच्छा पेंटिंग बनाते देखा है, एवरीबडी इज प्रेजिंग. सो दैट टाइम व्हाट यू थिंक, if you can make a painting like this, so you will also receive the same praise. so that is the vicarious learning. in negative sense में भी अगर आपने देखा कि किसी को कुछ पर्टिकुलर काम के लिए उसको पनिशमेंट मिला, सो इट इज ऑल्सो योर लर्निंग कि ऐसा करने से यू कैन ऑल्सो गेट पनिशमेंट. ओके, सो दैट टाइप ऑफ लर्निंग इज विकैरियस लर्निंग, जहाँ पे आप दूसरों का रिवॉर्ड या पनिशमेंट देख के यू आर थिंकिंग कि वो सेम आप पे भी क्या होगा, लागू होगा. इसका हम लोग क्लासरूम में यूज भी करते हैं. देयर इज वन वर्ड रिपल इफेक्ट. क्या होता है कि जब पानी में एक पत्थर जब फेंकते हो तो जो उसका जो वेव्स है इट गोइंग टू फार. ओके, लाइक दैट इन द क्लासरूम. ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम कंट्रोल करने के लिए हर बच्चे को डांटते हो. ओके, अगर आप एक को पनिश करते हो तो द सेम मैसेज गोज टू द होल क्लास. सो दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ विकैरियस लर्निंग. एक के जो है बिहेवियर से एवरीबडी हैज लर्न. आप अगर किसी एक बच्चे को प्रेज करते हो, शाबाशी देते हो, तो एवरी चाइल्ड विल लर्न फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम. इफ दे डू लाइक दैट, सो उनको भी टीचर का प्रेज मिलेगा. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ विकैरियस लर्निंग. मतलब यू डिड इट टू वन बट इफेक्ट कहाँ गया? सबके तरफ गया. एवरीबडी हैज ऑब्जर्व्ड एंड एवरीबडी हैज नोटिस कि ये करने से आई विल गेट रिवार्ड, ये करने से आई विल गेट पनिशमेंट. सो दैट लर्निंग कम्स अंडर विकैरियस लर्निंग. सो टू टाइप, इनएक्टिव एंड विकैरियस. नाउ कम द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. मीन्स ऐसा नहीं है कि we just observe and we just modeling and learning हो गया. There are certain processes which are going inside our cognitive domain or inside our information processing. So there are 4 process of learning जो हमारा learning के लिए या change in behavior के लिए responsible है. The first one is attention. Okay, attention, you know what is attention and how attentive you are. आपका किसी भी चीज को फोकस करने का, किसी भी चीज को नोटिस करने का जो आपका ड्यूरेशन है, दैट इज योर अटेंशन. मीन्स आप उतना ही सीखोगे जितने अटेंटिव आप हो. एंड लाइक इनसाइड द क्लासरूम एवरी टाइम आई से यू पे अटेंशन. मीन्स इफ यू आर अटेंटिव यू कैन लर्न व्हाट आई एम सेइंग. सो दैट इज द अटेंशन की हाउ फोकस यू आर, how you are noticing the thing. आप थिंग्स को जितना नोटिस करोगे उतना ही आप लर्न करोगे. सो our attention level is so much important कि आप कितना अटेंटिव हो पा रहे हो, किसी भी चीज को आप कितना ड्यूरेशन तक फोकस कर रहे हो, कितने ध्यान से आप उसको देख रहे हो. how you are noticing the every detail and every
एस्पेक्ट और आपका लेवल ऑफ अटेंशन जितना स्ट्रांग होगा, आपका लेवल ऑफ लर्निंग उतना स्ट्रांग होगा, आपका अटेंशन लेवल जितना एवरेज होगा, लर्निंग भी उतना एवरेज होगा, और अटेंशन का लेवल जितना पुअर होगा, आपका लर्निंग का रेट भी वैसा ही होगा. सो अटेंशन मीन्स यू हैव टू बी फोकस, यू हैव टू नोटिस ऑल द डिटेल. देन कम रिटेंशन. ओके, आपने अटेंशन दिया, आपने सीख भी लिया, आपने नोटिस भी कर लिया, बट हाउ मच यू रिटेन इन योर माइंड. ऐसा नहीं होता है कि आपने अभी देखा और अभी बस कर लिया. ठीक है, आज देख के अभी देखा और 1 मिनट के बाद भी करना स्टार्ट कर दी. नो, वट एवर यू हैव ऑब्जर्व, वट एवर यू हैव नोटिस्ड, वट एवर यू हैव टेकन, उसको आपके माइंड में आपको रिट्राइव करना है, आपके माइंड में उसको रिटेन करना है, आपको रखना है. मीन्स हियर कम द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी. आप कितना आपके माइंड में चीजों को कितने लंबे टाइम तक रख सकते हो, उसको लॉ ऑफ फॉरगेटिंग से बचा के. ठीक है, मतलब तो इसके लिए आपका अटेंशन का वो लेवल कितना था, आपका वो फोकस कितना था, कि आपके माइंड में वो कितना अपीलिंग है, कितने टाइम तक आप उसको आपके ब्रेन में आप स्टोर करके रख सकते हो. और व्हेनेवर यू रिक्वायर यू कैन रिट्राइव, यू कैन रिकॉल एंड यू कैन परफॉर्म. सो रिटेंशन एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू रिटेन. इसके लिए बहुत सारा टेक्निक है. समटाइम्स हम वी कैन मेक यूज ऑफ एसोसिएशन. आप किसी चीज को किसी चीज के साथ एसोसिएट कर देते हो, एंड सपोज कि आपने किसी चीज को किसी चीज के साथ एसोसिएट कर दिया, तो अगर आपने ए को बी के साथ एसोसिएट कर दिया, तो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट बी, तो आपको ए ऑटोमेटिक याद आ गया. ठीक है, सो रिटेंशन के लिए भी अलग अलग टेक्निक है, हाउ यू रिटेन द थिंग्स इन योर ब्रेन. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स जब आपने अटेंशन से आपने सीखा, रिटेन करके आपने उसको माइंड में भी रखा है, देन रिप्रोडक्शन, माइंड में रख के आपने किया, एंड देन यू फॉरगेट. बट आफ्टर फ्यू टाइम्स आपको फिर से वो चीज को करना है, आपको फिर से उस लर्निंग का जरूरत है, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को डिस्प्ले करने का जरूरत है. ओके, सो दैट इज द थिंग रिप्रोडक्शन, कि वी हैव सर्टेन लिमिटेशन, कि आप इस पर्टिकुलर जो आपको ऑब्जर्व करके जो आपने सीखा है, उसको आप कब तक जो है आप उसको आप उनको अपने में रख सकते हो, कब तक आप उसको फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हो. एंड ऐसा नहीं होता है कि आपने अभी सीखा है अभी ही आप परफॉर्म कर दोगे. ओके, सो रिप्रोडक्शन सजेस्ट, ये हमारा लिमिटेशन है कि हम इसको बाद में भी कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं. वी कैन परफॉर्म इट और वी कैन नॉट परफॉर्म इट. एंड समटाइम्स ऑल्सो हैपन कि आपने देखा कि somebody they are singing so well, okay, but you are trying to sing but you cannot sing, क्योंकि आपने वो जो एक जो एप्टीट्यूड है, सिंगिंग एप्टीट्यूड जो है वो नहीं है. सो इन दैट केस यू कैन नॉट सिंग. ओके, somebody they are making very good painting, you observe and you try to make, बट उसके जैसा आपको you can't produce, क्योंकि मे बी दैट पर्टिकुलर एप्टीट्यूड आप में क्या है, मिसिंग. दो यू ट्राइड, यू ऑब्जर्व मैन्युअली, बट आप नहीं कर पा रहे. सो दैट इज द रिप्रोडक्शन, जो लिमिटेशन है हमारा फिजिकल बोलो या एबिलिटी वाइज, जो हमारा लिमिटेशंस है, जिसके लिए हम किसी भी काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हम एक रिस्ट्रिक्शन फील करते हैं बेस्ड ऑन आवर एबिलिटी एंड आवर फिजिकल इनएबिलिटी. सो दैट कम्स अंडर रिप्रोडक्शन, हम उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. देन एट लास्ट कम मोटिवेशन. एज वी नो दैट मोटिवेशन इज एवरीथिंग, एंड यू ऑल्सो नो इट्स ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. सो everybody observe everyone. Okay, like there are in India there are I think thousands of boys who want to be like, want to play like Kohli, want to play like Dhoni and Tendulkar, but not everybody can. Okay, there are so many person they want to be successful like others. There are so many person they want to be famous like others, but everybody cannot do. Why? Here comes the motivation. आपका मोटिवेशन जितना होगा उतना ही आप परफॉर्म कर पाओगे. ओके, नो मैटर यू आप में टेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन एबिलिटी है या नहीं, बट यू हैव टू बी मोटिवेटेड. मीन्स आप में वो एक मोटिवेशन फैक्टर इंटरनल या एक्सटर्नल जब आपको मिलता है, देन ओनली यू कैन परफॉर्म. ओके, वी ऑब्जर्व एंड विद द टाइम वी फॉरगेट, बट इफ वी आर मोटिवेटेड वी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, वी ऑब्जर्व अगेन एंड अगेन, एंड अल्टीमेटली वी परफॉर्म, we learn completely. Okay, so basically motivation, it is a
फोकस ऑन विकैरियस रीइंफोर्समेंट। आप देखते हो कि किसी को जीतने के बाद प्राइज मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, किसी को सेल्फ स्टीम मिलता है, प्रेस्टीज मिलता है, सो यू वांट that thing with you also, that vicarious reinforcement you want for you also, so that work as a motivation factor। आपको भी लगता है कि yes, if you can perform like her, you can also win the same fame and name or same success। तो ये यहाँ पे आपके लिए motivation काम करता है। So they are the process of learning, attention, retention, reproduction and motivation। कि ये सारा factors अगर आपने जैसा काम करेगा, आपका rate of learning वैसा होगा। So learning, so according to Bandura, so in social learning theory, learning occurs through, there are 4 points: modeling, as I told you, किसी को जब analyze करते हो, you try to copy, you try either through identification or imitation, then self-efficacy. Self-efficacy is a sense where you are thinking, yes, you can do, okay, you can do and you can do efficiently। आप जो कर सकते हो, ये जो फीलिंग आप में आती है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड इफ इट इज देयर देन ओनली यू कैन परफॉर्म। नेक्स्ट इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इज देयर, ओके, क्योंकि जब तक हमारा, जब सपोज कि आपने किसी को ऑब्जर्व करके कोई काम किया, ओके, सपोज उस काम के लिए ही और सी वॉज गेटिंग रिवॉर्ड, अगर आपको भी इस काम के लिए रिवॉर्ड मिलता है पॉजिटिव, तो ये जो बिहेवियर है आपका और क्या हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है फॉर द फ्यूचर, ओके। सो जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर बिहेवियर है कि अगेन वी सो द सेम थिंग इन द फ्यूचर, और चाहे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो या पॉजिटिव हो, दोनों में आपका बिहेवियर सस्टेन करेगा, ओके। सो रीइंफोर्समेंट क्या है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जब भी आप किसी को मॉडल एनालाइज करके जब आप इमिटेट करते हो एंड देन अगेन सेम रिस्पॉन्स आपको मिलता है, सेम रीइंफोर्समेंट आपके रिस्पॉन्स को मिलता है, सो यू आर मोटिवेटेड एंड आपका वो स्ट्रेंथन होता है कि दैट बिहेवियर यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड। एंड द लास्ट इज सेल्फ रेगुलेशन, ओके, यू हैव टू मेक सर्टेन डिसीजन, यू हैव टू मेक सर्टेन थिंग्स कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। Everything you can imitate and identify, you cannot do, sometimes you can and sometimes you cannot। तो ये जो चीज जो आपको पता होती है और उसके अकॉर्डिंगली जब ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि there is a one saying ना कि you cannot make a fish to climb on tree, a fish can float on water only। fish water में swim कर सकते हैं, but fish कभी भी पेड़ के ऊपर नहीं कर सकते हैं। यू कैन लीड अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। सो देयर आर सर्टेन थिंग, इट शुड बी बेस्ड ऑन योर एबिलिटी। तो उसका आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू शुड ऑब्जर्व एंड व्हाट यू कैन परफॉर्म, एंड जब उसके बीच में मैचिंग होगा देन योर लर्निंग इज मोर फ्रूटफुल एंड मोर इफेक्टिव। So that is a theory of Bandura's social learning theory, which was based on the social cognitive main society में जो हम लोग अपने माइंड का प्रोसेसिंग एंड जो एप्लीकेशन करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो हम लर्निंग करते हैं, दैट इज आवर सोशल लर्निंग theory, because we are a social animal, we survive in the society, we learn in the society and we impart to our society। So I hope you understood something, but if any doubt, any problem, we will try to solve it in our Google Meet। So thank you so much।